Hi Neeraj, how are you? I'm fine, thank you. Glad to join this channel, glad. Yeah, so it's basically like ये मेरा पहला on-site internship है, so like relocating to Bangalore, it's like completely different world from my hometown. And first time when I like arrived Bangalore, the vibe it's like completely different. And when I like जब पहली बार मतलब office start हुआ on 9 Jan, so it was like there was also an event over here. So for the interns, it was like an big opportunity. Like the CTO visited us, and on the first day, interns also like attend this event. So it is like a pretty rare moment for the company also. तो लाइक उसी दिन लाइक क्या हुआ कि मैनेजर्स और टीम भी थे एंड वो लोग मुझसे हमसे साइलेंटर से मीट भी किए हैं तो यू नो ऐसे जैसे होता है ना कॉलेज से हम जाते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में एक लाइक स्विच ऑन ऑफ टाइप का है ये लाइक द एनवायरमेंट और एटमोसफियर इज कम्प्लीटली डिफरेंट वो जो सीरियस टेंशन रहता है एंड मीन्स अमंग द टीम्स एंड व्हेन यू मीट सुपीरियर्स मतलब एक अलग फील है यहाँ पे तो अभी करंटली क्या हो रहा है कि वैसे बहुत सारे इंटर्न्स यहाँ पे हैं फिर टीम से बहुत मतलब बहुत वेरियस टाइप के मतलब टेक स्टैक पे काम कर रहे हैं तो जैसे कि फिलहाल मेरे लिए क्या है कि जो मुझे एक्सपोज किया गया जिस टेक्नोलॉजी पे वो मेरे लिए कम्प्लीटली न्यू है सो एंड आई ऑल्सो लाइक टू लर्न न्यू टेक स्टैक्स एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट प्रोग्रामिंग यूजुअली ऐसे क्या होता है कि इंटर्न्स लोगों का ऐसे कुछ काम वैसे मिलता है जिससे कि उनके डोमेन से रिलेटेड कुछ हो लाइक बट फॉर मी इट वाज लाइक अपोजिट थिंग so I was exposed to a completely new tech stack which is Salesforce and currently I'm learning I've learned a lot of stuff on it and even when they give me some tasks so I like perform I won't say like I'm performing very well but I'm coping up with the expectations. Mhm. We also went through that stage, first year. Yeah. Even I'm sorry for my bad quality. I'm not in my room also right now, so I have to adjust with this. Mhm. Mhm. Okay. Hmm. Okay. So for this, I won't say anything about the off-campus process because I don't have any that much knowledge about it. So for me, it was the on-campus process. Okay. So what happened initially was like, Autodesk came to our college like for the recruitment for interns. Then what happened is in that mail, we were like provided a form which we had to fill. In that we had to mention our personal details and also attach our resume. So this was the like initial stage for the hiring process. So like after I guess maybe around 10 days later a list came like for the shortlisted students based on the resume like who are going to proceed for the next round. So in that what happened was like process was that there were completely four rounds. So first round was online coding round in which there were four questions. So it's no aptitude or no MCQs or it were purely based on coding questions. And, two of them, I exactly don't remember the exact questions, but you know, I'm giving just an overview.
Two of them were easy questions. One was a medium question and another was a hard question. Basically, the concepts were covered. That it were like strings, array list, and for the medium questions, it was like some bit manipulation, and for the hard question, it was related to stack and queues. And uh, it was about the test also. I don't remember exactly, but the duration was like around 90 minutes, and I was able to like solve all the questions in like a pretty test time, and like all the test cases were also successful. So I was pretty confident that I will get selected in like the coding round, and I will be like proceeding to interview. So yeah, उसके बाद क्या हुआ कि like इसके बाद भी around 10 days की around 1 week or 10 days the results came like who were shortlisted for the interview. उसमें से I guess there were maybe 10 students who got selected, and there were a WhatsApp group was formed on it. Then the HR also contacted us about when like scheduling will be done for the interviews. इसके बाद क्या हुआ ना, अभी तो पहला राउंड खत्म हो गया इसमें, अभी आता है नेक्स्ट राउंड. इसमें ये टेक्निकल राउंड था जिसमें कि इट वेंट अराउंड लाइक नहीं नहीं पहले टेक्निकल राउंड था. यप. सो सेकंड राउंड इसमें पूरा कोडिंग नहीं है, बट इट इज टेक्निकल इन द सेंस लाइक वो लोग तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पूछेंगे, थियोरेटिकल फिर प्रैक्टिकल भी है. देन दे विल आल्सो लाइक आस्क यू टू कोड सम स्टफ. So for the second round, when the technical round started, it lasted for around 40 to 45 minutes. तो मुझे बेसिकली ऐसे पूछे कि लाइक ऐसे यूजुअली हर इंटरव्यू में होता ही है कि तुमको कुछ तो पूछेंगे ही. तो इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि तुमको लाइक उस पर प्रिपेयर करना ही है. So they like covered all the four pillars of books. So abstraction, inheritance, then we have encapsulation and inheritance. Yeah. So these pillars were covered in that. Then we have मुझे और theoretical question पूछे थे on based on cloud and databases also ऐसे हैं. तो SQL and NoSQL ऐसे पूछे थे. And अब ऐसे थियोरेटिकल का यूजुअली ऐसे बेसिक से पूछते हैं, इतना कुछ हार्ड से पूछते नहीं है. फिर जब आया है ना कि लाइक नेक्स्ट डे जब आया, तो दे वेंट लाइक दे वर शावरिंग ऑल द कोड स्निपेट्स टुवर्ड्स मी कि ऐसे चैट पे से कोड ऐसे दे रहे थे और यू दे वर लाइक टेलिंग मी टेल मी द आउटपुट. और ऐसे एक दो तो नहीं था, लाइक ऐसे भेजे ही जा रहे थे. तो यूजुअली क्या हुआ ना कि एक मोमेंट ऐसे आ रहा था कि लाइक आई गॉट टू नर्वस, एंड ऐसे कुछ कुछ मोमेंट्स है जिसमें लाइक मैं थोड़ा सा अटक गया था. बट still I kept my cool and like try to answer those. फिर जैसे वो सब जो कोड स्निपेट्स थे बेसिकली इट वर प्योरली बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस मोस्ट ऑफ द टाइम. देन जब आता है नेक्स्ट उसका कोडिंग पार्ट का, मतलब एक्चुअल वो क्वेश्चन दे रहे वाले थे. तो उसमें क्या हुआ कि यूजुअली क्या करते हैं ना कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन देख देख वो लाइक अचानक से कोड लिखने बैठ जाते हैं. तो यूजुअली मैंने ऐसा यूजुअली देखा है ऐसे ऑनलाइन ऐसे मतलब कि डेमो इंटरव्यूज में. So what I prefer is like you should ask them questions for the interviewer, like to get a proper understanding of what the question is trying to ask you. Get the proper constraints about the input variables. Then like output जो है expected जो है मतलब कैसा आना चाहिए. You have to like ask each and every detail. Then basically questions were not that hard, but if you have a proper knowledge and conceptual अगर clearance है, then you can pretty easily solve it. So and this was the second round. For the third round, it was pretty similar to the second round as well. मतलब कि वो भी technical round ही था. And उसमें भी like structure जो था questions के वैसे ही थे. मतलब पहले theoretical questions कुछ रहेंगे, फिर database और ऐसे टॉप पे कुछ पूछे मुझे. Then also then they went like for the code snippets and the coding questions. So it was like pretty similar to the second round. And like after interviews, like I was also confident that I did well in that. So I thought that I might be like getting into the HR round. So that also happened. When now we come to the fourth round, which is the HR round. So in this, like the manager took this HR round. So this is like a normal, interactive session. Like he asked me about my personal details, like my personality and my hobbies and all everything. And इसमें ज़्यादा मुझे टेक्निकल कुछ नहीं थे, बस नॉर्मल कन्वर्सेशन हुआ कि like how we are like how am I able to communicate or not. So but this was a very short round. It was like around 20 minutes. So after this, after this four rounds, like the process was over, and after I guess maybe 2 days later, I got a call from the college, our placement team that I've been selected, and so I was glad to like accept this, and then this was the process, and like I joined Autodesk. Yeah.
I would say maybe it from the yeah, you're audible. Thank you. बट यहाँ पे तो ठीक है लाइक तुम्हारा वॉइस सही है. मे बी मैं तो जूम में हूँ तो शायद मुझे तो ठीक ही लग रहा है. आई डोंट नो अबाउट द स्ट्रीम. लेट मी चेक एज वेल. ऑडिबल. लेट मी चेक इट. ओके. They're saying like my voice is all good. अच्छा एक काम कर सकते हो ना लाइक इफ यू कैन जॉइन थ्रू योर फोन एंड टर्न ऑन इट्स माइक देन उसका लाइक बेटर होगा. या फिर लाइक अपने लैपटॉप से यू नो कैन टर्न ऑफ द माइक एंड कैन ट्राई. नो इश्यूज. लाइव स्ट्रीम होता है इशू वैसे. Am I audible? Hello. Actually, you know, yeah, अब ठीक है, अब ठीक है. I think your voice will echo. इको तो होना नहीं चाहिए. हाँ, नाइस क्लियर. Okay, great. चैट से पूछ रहा हूँ तुम. हाँ. Let me see. हाँ, अब आ रहा है. Am I audible, guys? एक बार बता दीजिए, please. Sorry about this malfunction. Okay, great. Nice. Yeah, just give me. Okay. Yes, so sorry about this
I didn't know. And yes, so like, okay, so where were we? About your interview process. So it was, sorry, how long was the interview process exactly? Like ये कितना time तक चला मतलब from coding round से लेके last interview round तक? Okay, so my form submission का like I'm exploring it. So I think it took maybe 3 weeks. Around 3 weeks it was okay overall. Just 3 weeks. Yep. Okay. Actually, like मैंने जितने भी interview process देखे थे, Autodesk process was like really fast and like they were on point at all the time. Means schedule कभी miss नहीं करते थे. Time to time for everything. Okay, that's great. Yeah. Okay. So, like, I think a lot of people have joined in hopes कि हम resume के around discuss करें. तो Okay. well, like, what are the most important elements जो तुमने अपने resume में include किया था, which you think kind of attracted the recruiters? Like, what if you can showcase your resume and discuss the main points, what to include, what not to include, like that would be great. So should I share my screen, right? Okay. Yes, sure. Okay. Share screen. Who's has disabled? I think we need to enable screen sharing for me. Okay, sorry. Yeah. Okay. Oh, it's visible, right? Yeah. Okay, इसको minimize करना पड़ेगा. Why they made this toolbar so big? Okay. Actually, मेरे जो resume है, it's not my updated one. It's like a sample demo type role. इसमें और Okay. मतलब बहुत I have to work on this. So, but इसमें मैं cover करता हूँ कि like आपको क्या क्या रखना है ऐसे मतलब कि resume में जिससे like you can showcase a skill set to the interviewer. Usually मैं पहले ऐसे बताऊंगा कि for जैसे मेरे particular role जिसको जो था SDE role उसके लिए like जो key elements हैं. So I think the first and the most important element would be your internship experience. The past internship or any other prior experience which you have in the technical field. Then उसके बाद the next element would be like your IT skills. Like आप कौन से technical languages जानते हैं, programming languages जानते हैं. फिर like आपको मतलब कि कौन से टेक स्टैक्स पे आपने काम किया है, कि आपको कौन से पता है. फिर उसके बाद एक जो एलिमेंट आता है क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं आप, क्योंकि आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा कि आप जो आईटी स्किल्स जानते हैं. तो सिर्फ लर्निंग डजंट प्रूव दैट यू नो इट वेल. यू नीड टू लाइक गेट सम प्रोजेक्ट्स ऑन इट एंड आल्सो वर्क ऑन इट समथिंग. Okay. तो पहले हम आते हैं जैसे कि ऐसे कि दिस इज जस्ट अ डेमो रिज्यूमे, यू डोंट हैव टू लाइक फॉलो एग्जैक्टली. बट ऐसे देखिए, सबसे पहले बात तो अपने आपका डिटेल्स बता दिया, जैसे नाम, फोन नंबर, ईमेल वैसे वगैरह जो भी है. एंड इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको हमेशा डालनी चाहिए, जैसे कि एक लिंक्डइन प्रोफाइल है जो हमेशा आपका अपडेटेड रहना चाहिए, और यू हैव टू प्रेजेंट इट ऑन रिज्यूम. एंड उसके बाद और एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जो कि अपना गिटहब लिंक. इसमें एक्चुअली मैंने मेंशन नहीं किया, बट यू शुड ऑलवेज प्रोवाइड दैट लिंक, बिकॉज दैट विल शो लाइक हाउ यू एक्टिव यू आर ऑन द गिटहब गिट एंड ऑल, कि दिखा दे कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को कितना मेंटेन करके रखते हो, आपके कमिट्स कितने रेगुलर हैं. Okay. Okay, so as I said, the most important thing would be the experience part. So in that you need to mention like आप किस कंपनी में काम किए थे, वो ऑनसाइट था कि ऑनलाइन था, एंड उसका ड्यूरेशन क्या था, आप कौन से टेक स्टैक्स पे काम किए हैं, लाइक आपका रिस्पांसिबिलिटी क्या था, रोल क्या था. तो एक्चुअली ऑटोडेस्क पे काम करते वक्त मुझे ऐसे कुछ मतलब ये बोले नहीं कि शेयर करने के लिए, सो आई एम नॉट शेयरिंग अबाउट द प्रोजेक्ट एंड ऑल, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लाइक मैं किस चीज पे काम करता हूँ. जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियसली कि मुझे कंप्लीट एक नए टेक स्टैक पे मतलब कि डाल दिए थे, तो उसमें से मुझे सेल्सफोर्स का बहुत नॉलेज मिला है. तो और एक ऐसा टिप मैं इसे बोलना चाहूंगा कि आप लाइक क्या होता है कि जब रेज्यूमे आप पढ़ते हो, इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, एंड इंटरव्यू ऐसे दिन में बहुत इंटरव्यूज लेते हैं, तो दे डोंट हैव लाइक टाइम टू गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन मींस डीपली. सो बेटर ऐसा होता है कि आप जो पॉइंट को हाईलाइट करना चाहते हो आप उसको बोल्ड करके रखिए, ताकि इंटरव्यूअर का हमेशा मतलब आई मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एकदम वो मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई टूल हो, कुछ भी हो, उस पर डाल जाए और उनको दिखे कि लाइक आप किस चीज पे काम किए हो.
सो जो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं उसको बोल्ड करके ऐसे डाल देता हूँ, सो इट Okay. क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन. So it's basically like I have written in this like what I've learned in Salesforce, और फिर मुझे एक्सपोज किए थे इस टेक्नोलॉजी पे जो है AWS लैम्बडा. तो ये था अपना जो मेरा करंट ऑटोडेस्क इंटर्नशिप है. उसके प्रायर अगर आप बताना चाहते हैं कि आप कौन से चीज पे काम किए, किस कंपनी पे काम किए, सो यू कैन मेंशन दैट योर प्रीवियस कंपनीज एज वेल, in which like you can mention it over here like this, और you can like सेम कॉन्सेप्ट है, लाइक आप किस चीज पे काम किए थे, क्या प्रोजेक्ट बनाए थे, तो you can like mention the languages and algorithms, So whatever. if someone does not have any internship, like will that make a difference? क्योंकि बहुत सारे juniors मेरे पास आते हैं क्वेश्चन लेके कि दीदी internship तो लग नहीं रही, but तो I usually say कि focus on projects, personal projects make a huge difference, because जरूरी नहीं है कि एक work experience होना चाहिए. तो what are your thoughts on that? मतलब Okay. क्योंकि अच्छा. landing an internship is a little difficult for newcomer, right? हाँ यार, श्योर श्योर. ऐसे हमारे साथ भी ऐसे वही था, लाइक फॉर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे यूजुअली होता है कि इंटर्नशिप को नहीं मिलता क्योंकि कंप्लीटली फ्रेशर हो, राइट? Yeah. तो ओके, लेट्स से इफ यू आर नॉट एबल टू गेट एन इंटर्नशिप, लेकिन लर्निंग तो कभी रुक नहीं सकती. तो आप जैसे कि एक एसडी रोल के लिए आपको और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है लाइक आईटी स्किल्स. उसके लिए तो आप जैसे कि यहाँ पे मेंशन करके रखा हूँ मैं, ये सब जो चीजें हैं लाइक कोई आपको बाउंड नहीं करता कि आप ऐसे सीख नहीं सकते. सो यू कैन एक्सप्लोर ऑन योर ओन. जैसे कि लेट्स से आपके एकेडमिक्स में आपको कोई लैंग्वेज पढ़ा दिया है, लेट्स से जैसे हमारे केस में क्या होता है, हमको जावा पढ़ाए थे पहले फर्स्ट ईयर में. सो लाइक ऐसा नहीं था कि मैं एक ही लैंग्वेज में से फिक्स होके हूँ. एक जब धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा लाइक टेक्निकल फील्ड में, आई ट्राई टू broaden my domain. So I went for other languages as well in Python and C. And पता है लाइक ऑनलाइन बहुत कंटेंट अवेलेबल है. आप यूट्यूब में कोर्सेज ले सकते हैं, यूट्यूब पे फ्री ट्यूटोरियल्स भी हैं, आप कहीं से भी सीख सकते हो. So So what were your resources? तुमने क्या basically I followed mostly YouTube and Udemy. Mostly, I would be frank. for DSA Yeah, DSA and other projects? developmental tools. Yeah, yeah. तो ऐसे क्या है कि आप ऐसे आईटी स्किल्स सीख रहे हो, ठीक है, जैसे कि लैंग्वेजेस आपने सीख लिया है, एंड फॉर एग्जांपल आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपको एक टेक स्टैक चूज करते हो. फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर चूजिंग वन, तो इसमें आपका ऑफ कोर्स बेसिक चीज आता है कि आपको रिएक्ट जैसा आना चाहिए. यू कैन सर्च ऑनलाइन फॉर देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल. सो आप यूट्यूब से पढ़िए कि यूट्यूब से पढ़िए. पढ़ने के बाद क्या है कि आप जो नॉलेज एक्वायर किए हो आपके पास आ गया, ठीक है, उसको लेकर आपको यूज करके कुछ ऐसा प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा कि वो दिखाए कि आप जो सीखे हैं आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं. वो चीज अगर आप दिखा दिए तो लाइक वो एक इंप्रेशन बना देगा जो इंटरव्यूअर को कि हाँ कि इस बंदे ने लाइक जो पढ़ा है उसको खुद अपने आप से यूज करके कुछ ऐप बनाया कि कोई एप्लीकेशन बना के कुछ भी ऐसे हो. सो ऐसे अपने स्किल सीख लिए, फिर आप ऐसे खुद से पर्सनल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं एंड यू कैन मेंशन इट ऑन योर रेज्यूमे. Okay. तो इससे लाइक ऐसे बनता है कि इवन आप इंटर्नशिप नहीं किए हो बट यू आर आल्सो लाइक मेंशनिंग द प्रोजेक्ट्स. ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मतलब for training to advance in the technical rounds. Yeah. Okay, so like resume में the key things that we should add should be like your work experience, Yeah, that is projects, important. the main headlines like projects, internships, languages or skill set, or anything related to extracurriculars like या फिर वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है. फिर देखिए आपने आईटी स्किल्स प्रोजेक्ट्स तो मेंशन कर दिए, फिर आप अपना एजुकेशन भी मेंशन कर ही सकते हैं क्योंकि फ्रेशर के लिए education. लाइक यू शुड मेंशन राइट आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, Yes. आप किस फील्ड से आए हो, तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा. देन आफ्टर कमिंग टू दैट कम्स द ऑप्शनल पार्ट. जैसे लाइक यू कैन मेंशन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि आप किस चीज पे इंटरेस्टेड हैं. Anyone can write anything like आप उसमें like उनको Android पे इंटरेस्ट है कि like they want to do full stack development or they want to go for machine learning, anything is fine. And yes, another important element would be the certifications. Like आप कहाँ से जो सीख रहे हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं क्योंकि सर्टिफिकेट्स भले ही like there are a lot of sources from where you can do certifications, but Yes. doing this also plays a key role in like building a resume. Okay. देन अगर आप ऐसे कॉलेज के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लाइक पार्टिसिपेट करते हैं, देन यू कैन आल्सो मेंशन दोस लाइक इफ यू अटेंड वेबिनार्स एंड ऑल, यू कैन मेंशन दो.
और अवार्ड रिकॉग्निशन आपको कहीं मिला हो, then you can also mention those. वो एक like plus point डाल देता है आपके resume में कि like I'm also engaged in other stuff as well. Okay. So like that was a very brief description. बहुत अच्छे से like I got a lot of clarity as well. I hope juniors लोग को भी it's been helpful, right? So and one more question, like जैसे company specific resumes भी prepare करने रहते हैं, so like what are your like opinion on that? Like how should one prepare for company specific? Like did you prepare a separate resume for Autodesk SDE position? Actually yes, I have prepared a separate resume for while applying to Autodesk. Actually वो resume मेरे पास currently है नहीं, वरना I should have Okay. एक demo हाँ, but like resume. मतलब ऐसे different companies के लिए we prepare Yeah, okay. according to it, right? So let's say आप SDE रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है? तो लाइक ये एक ऐसा रोल है कि इसमें से कुछ पर्टिकुलर टेक स्टैक ऐसा रहता नहीं कि आपको इसी पे ही काम करना है. Like you are very flexible to many developmental tools. So like you have to be open to every language or every developmental tools whatever it is. तो आपको ऐसे करना पड़ेगा कि सबसे मेन एलिमेंट क्या होगा एक एसडी रोल को जब अप्लाई करते हैं, उनका मेन पार्ट है कि अगर आपके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है, आप श्योर मेंशन कीजिए कि आप किस फील्ड से आए हो, क्या काम किए हो. उसके बाद मैं बोलूंगा आईटी जो स्किल्स है, ये आपको बहुत अच्छे से हाईलाइट करना है कि एसडी रोल पे आप जब अप्लाई करते हो. Yeah. आप जितने अच्छे ज्यादा लैंग्वेजेस आपको पता होंगे उतना ही बेटर है, क्योंकि वो इट विल मेक द इंटरव्यूअर नो दैट लाइक यू आर ओपन टू ऑल टेक्नोलॉजीज, लाइक आप बहुत सीखना चाहते हैं. हाँ, एक क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये कि लाइक कौन से लैंग्वेज को मेन करना चाहिए. आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अराउंड दैट कि मैं हमें कॉलेज में जावा पढ़ा रहे हैं बट मेरा इंटरेस्ट इसमें है, प्लस सी भी पढ़ाया जा रहा है, एंड दे आर इंटरेस्टेड इन पाइथन. तो व्हाट शुड दे डू फॉर दैट? लाइक Okay, so even मैं भी जब ऐसे फर्स्ट ईयर में था, I also used to get a lot that there are a lot of various languages. Okay, so I used to get it all the time that आप जो भी कीजिए एक लैंग्वेज को फोकस करके हमेशा उस पे लाइक अपना डोमेन बना के रखिए. फॉर मी इट वाज लाइक व्हेन आई फर्स्ट एंटर्ड टू कॉलेज, मेरा लाइक प्रायर आईटी बैकग्राउंड में कुछ नहीं था. So when I started over here, so I was exposed to Java. So धीरे धीरे जब इसमें इंटरेस्ट आने लगा, so मैं ऐसा बोलूंगा कि जावा became my primary language. तो मैं हमेशा ऐसे ही सोचता हूँ कि कुछ भी हो जाए तो मैं इसे प्रेफर करूँ कि जावा से यूज करूँ. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक चीज पे ही फोकस्ड रहें. इफ यू लाइक फाइंड पाइथन इजियर देन जावा, यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर पाइथन एंड एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स. उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए, उनके नए फीचर्स को एक्सप्लोर कीजिए. फिर ऐसे कुछ अपने लोकल मशीन पे ही कुछ अपना अच्छे प्रोजेक्ट बना के अपने उसके नए फीचर्स को टेस्ट कीजिए. सो ऐसे मैं बोलूंगा नहीं कि ऐसे कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज पे आप हमेशा टिके रहिए. तो लेकिन आपको कुछ डिफिकल्टी होती है दूसरे लैंग्वेजेस में, सो आई वुड प्रेफर जिस पे आप कंफर्टेबल हो, नो मैटर इट्स जावा, सी और पाइथन, चूज एनी वन लैंग्वेज. एक लैंग्वेज मतलब कि एक जो लैंग्वेज पे फोकस. एक लैंग्वेज पे इनिशियली फोकस कीजिए. ओके. लेट्स से यू टुक सी, तो क्या 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 भले आपका एकेडमिक्स में पाइथन हो जाना हो, बट आपने आप खुद से सी पढ़ी, क्योंकि अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है यू शुड कंटिन्यू ऑन दैट. मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूँ कि वंस यू गेट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, अबाउट वट एवर द फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो भी है, अगर आप कुछ सीख भी गए ना, आपको जब दूसरी चीज में माइग्रेट करना हो किसी और लैंग्वेज में, आपको इतनी मतलब डिफिकल्टी नहीं होगी. Second, learning a new language is pretty easier when you got a proper understanding on a particular language in depth. So language पे इतना बड़ी मत कीजिए. जब आप ऐसे corporate life में जाएंगे, you will be exposed to a lot of languages. Yeah. And we have questions from audience, like Rudra Sahu is asking, what is your dream company and how can you achieve it? Okay, dream company. ऐसे तो everyone wants to go to those so fun companies, right? Yes. Google, Amazon, Microsoft and all. तो ऐसे I should mention a particular company, but एक ऐसे कंपनी पे you should focus जो इसका मतलब reputation बहुत high हो, and वहाँ पे एक बार आप join कर लिए, the main point should be you should have room for growth. आप जिस कंपनी में जाइए, भले आप जो भी पहले जानते हो, आप वहां जाके नई चीजें सीखिए.
सो इट डजंट मैटर कि आप कौन सी कंपनी जा रहे हो, लेकिन जाइए वहाँ पे नई चीजें सीखिए, build projects and improve yourself, and you can reach a lot higher by following this. Okay. And Sharma ji is asking, do internship in startups have any value? Okay, or it's a must to do it from a reputed company? That's a good question. Okay, this is a very good question. Usually क्या होता है कि in reputed companies there is already stuff made. Okay, they have already developed applications for their own, and when an intern like goes to the team, usually what happens is like you are learning. Okay, there is no doubt, but it is something like it is a very slow kind of process. Because things are already there, and you are not like going in depth about it, and like जो पहले से आप उसी पे ही काम कर रहे हो, लाइक उसका आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो, या फिर आप लाइक उस पे कुछ नया फीचर ऐड कर रहे हो, ऐसा हो गया। लेकिन ऐसे मैंने देखा स्टार्टअप्स में क्या होता है कि यूजुअली वो एक डेवलपमेंटल स्टेज में, ठीक है। When you join a startup as an internship, as an intern, so what happens is they will provide you a completely new tech stack. उस पे आप कभी काम नहीं किए होंगे, उस पे आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। एंड यूजुअली ऐसा क्या होता है कि उधर मुझे ऐसे फील हुआ कि लर्निंग का ग्रोथ कुछ ज्यादा ही वहाँ पे मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई वुड से, जैसे मेरे प्रीवियस इंटर्नशिप में हाईराडियस जो था, इट इज आई वोंट से इट्स अ कंप्लीटली रेप्यूटेड कंपनी, बट काइंड ऑफ स्टार्टअप भी नहीं है। इस पे ऐसे क्या हुआ था कि मुझे जो एक्सपोजर मिला ना फुल स्टैक डेवलपमेंट में, इट वाज लाइक वेरी ग्रेट। लाइक आई गॉट एक्सपोजर टू फुल स्टैक डेवलपमेंट, देन मुझे मशीन लर्निंग पे भी लाइक एक्सपोजर मिला। बट अभी ऑटोडेस्क पे आने के बाद लाइक ऐसा है कि भले ही मैं कुछ नया चीज सीख रहा हूँ, बट वो लर्निंग प्रोसेस थोड़ा स्लो है कंपेयर टू स्टार्टअप्स। आई वुड से कि अगर आप इंटर्नशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट एनी स्टार्टअप कंपनी, आप वहाँ जाइए, देन लाइक अपने जो स्किल सेट है ना उसको ब्रॉडन कीजिए, कुछ मतलब नई चीजें सीखिए, उस पे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाइए, उस पे लाइक अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लाइक फाइन ट्यून कीजिए। Then when you like go to a reputed company, like you can show a lot of things, like how well you have refined or fine tuned yourself in those developmental tools. Okay, so like your previous internships, I checked your profile and I got to know that you have done an internship in Samsung Prism as well. Yeah. And of course HighRadius. So like एक बहुत बड़ा impact रहा क्या उनका, like working there definitely would have helped you in Autodesk. Okay. Interview point of view say, if I would say, then these three companies when I applied for it, so the roles were completely different. Okay. So ऐसे resemblance कुछ ज़्यादा है नहीं मतलब interview process में. But even the tech stack is also like even in Samsung Prism I was like exposed to mostly Python. Then in HighRadius I was like exposed to the full stack development. तो इतना relation था नहीं. तो जो चीज मुझे help किया है वो interviews में कि like क्योंकि जो भी इंटरव्यूज में रिलेटेड रहता है कि हूप्स कॉन्सेप्ट का, कि कुछ कोड सिमेट्स के आउटपुट क्वेश्चन ऐसे होता है, ये सब पे मुझे लाइक इन तीनों कंपनीज में जो लिंक था थोड़ा हेल्प किया है। बट कमिंग टू द वर्क एक्सपीरियंस, सो आई थिंक देयर इज नॉट दैट मच सिमिलरिटी जिससे मतलब मुझे हेल्प हुआ। ओके। And like एक और question, like during interviews we get nervous before it and बहुत stress आ जाता है कि यार नहीं होगा तो क्या होगा and all. So how did you handle that? Like any specific technique which you used? To frankly, I would say that usually I get a lot nervous. Okay, whenever I'm in interviews or any like someone is asking me something question, I get a lot stressed and nervous. So what happens is like I have this trait, okay, like whenever I'm into something or when I like try to like focus into something, क्योंकि I'm very passionate about programming. So let's say ऐसे interview चल रहा है like मेरे interview के बीच में, and he asked me some question. Once I like entered like thinking about it, like when I'm going to like code or something, I don't know what happens to me, but like I completely forget about all those external that disturbances and all. मतलब मैं एकदम इतना फोकस रहता हूँ कि like I don't get distracted. But वैसे और एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि जैसे कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछ रहा है, आप लाइक थोड़ा सा स्टैमर कर रहे हो कि कुछ हो गया जिससे लाइक आपको एक इंस्टेंट ऐसे नर्वसनेस आ जाता है कि लाइक सामने वाले को उतना अच्छा नहीं लगा. What I usually do is like it's a very simple thing. I used to take deep breaths. That is the most simplest thing. उससे क्या होता है कि like I know why, but I get cool down very pretty easily.
फिर उसके बाद क्या होता है कि लाइक आई फोकस कि वो जो पूछे हैं मुझे बस वही सुनना है, मुझे और कुछ सोचना नहीं है। आई हैव टू कीप माई माइंड क्लियर। जो पूछे हैं एकदम उसी पॉइंट पे मुझे सोचना है और आंसर देना है एकदम पूरे वे में। और ऐसे कुछ वी डोंट हैव टू बी रूड एंड वी डोंट हैव टू बी फास्ट स्पोकन एंड ऑल। तो धीरे धीरे ऐसे इंटरव्यू दे दे के आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको किस वे में आपको आंसर करना है। Okay. So just suppose you have a challenging coding question and you don't know कि कैसे solve किया जाए, and अब वहाँ पे like interview के सामने you get very कि यार अब ये तो मेरे को आता नहीं है, so what did you do या फिर what will you do in future अगर कोई दूसरे interviews होगे तो like ऐसे situation को handle कैसे करें, like you don't know the answer and it's like I mean like do you try to reason through the problem, get to the solution anyhow या फिर you simply say कि नहीं I don't know the answer? Yes. Okay, this is a nice question. इसके like बहुत various cases हैं. I would like mention some of them. Let's say he asks you some coding question like do this and you have to get this output. There's a case like when you don't understand the question. Okay, so what you can do is you can simply ask the interviewer like what are the constraints on the input, what output it is expected. Then you can think on your own and like ask him that if this is the input, let's say ABC is the input and the output is 100. So if you ask that and the interviewer tells yes, that is the perfect thing. So ऐसे का आपको क्लैरिटी मिल गया कि हाँ मतलब मैं जो सोच रहा हूँ सही है, then you can work out on the coding problem and you will like eventually solve it. But there may be cases like you don't understand the question at all. तो ऐसा केस है कि लाइक अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आपको ऐसे घुमा घुमा के कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली जस्ट से नो कि आई एम नॉट एबल टू गेट इट। यूजुअली क्या होता है कि इंटरव्यूअर ऐसा कुछ हिंट्स दे देंगे, जैसे आपको कुछ एक एक पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। देन व्हेन यू ट्राई टू थिंक ऑन दैट हिंट यू विल इवेंचुअली गेट इट, लाइक आपको किस वे में आपको प्रोसीड करना है। एंड ऑल्सो द इंटरव्यू ऑल्सो हेल्प यू लाइक वी कैन डू दिस, देन यू कैन अप्लाई सम मोर लॉजिक एंड यू विल इवेंचुअली कम टू द सॉल्यूशन। तो इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि मतलब कि इंटरव्यूअर वोंट स्कोल्ड यू लाइक इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर इट। So he will also help you in like making you understand what the question is, and he will try to make you understand like how to approach to it, and you will eventually get it. So there is no need to worry. Okay. And like उस टाइम पे नर्वस हो जाते हैं तो कुछ भी आता नहीं है दिमाग में। नर्वसनेस का लाइक you have to be दिमाग से सब हटा देना है। जो पूछे उस पे एकदम फोकस करके रहिए। You will come to a point where you can reach the solution. Okay. So like we know that having a strong understanding of algorithms, DSA, like for especially for SDE interviews is very much necessary. And you said that you used YouTube and Udemy to learn for them. So one more point that interviewers are more curious about is that how you cover how do you stay up to date with the new technologies and programming languages or whatever, like upcoming tech stuff. So what is your way? What resource do you go through? Like some people scroll through LinkedIn to stay up to date or go through engineering blogs. So what was your thing? Okay, so coming to the DSA part, I'll talk about it first. Usually, like when I didn't know anything about programming, right? And you see people like learning a lot of stuff, and you also like want to catch up to them. What you can do is, what I did was like when initially I started Java. Basically, ऐसे कॉलेज academics में तो बहुत simple like कराते हैं questions, तो इससे आपको मिल जाता है अंडरस्टैंडिंग, बट आपको अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। So what I did was I started from HackerRank. I would say for beginners, it is best कि आप HackerRank से शुरू कीजिए। वहाँ पे बहुत ऐसे I think my screen is visible, right? Yes. If I can show you, let me just go to HackerRank. I don't know if this. Okay, what you can do over here is problem solving के चलते हैं यहाँ पे। Okay,
यू नो देयर इज अ वेरी वेल मेंटेन्ड दिस मतलब साइट में ऐसे जो है ना फिल्टर्स ऐसे बहुत सही हैं इनके। आपने हैकरिंग जब शुरू करना स्टार्ट किया आप देख सकते हैं कि डोमेन्स बहुत सारे हैं, आईएस इंग्लिश ट्रीज बायोलॉजी बहुत सारी चीजें हैं। आप Yeah. एक एक टॉपिक को चूज कीजिए, उसके इजी से क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए। आप एक मतलब ऐसे पॉइंट पे आएंगे कि आप मतलब कि करते जा रहे हैं आपको एक एक अच्छा मतलब कि क्या कहते हैं मोटिवेशन मिलेगा कि आप जो कर रहे हैं ना आपको उसके पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स मिलने के बाद उसके आपको ऐसे बैजेस मिलेंगे। फिर क्या होता है कि आप अपने दोस्तों के साथ स्प्रेड कीजिए ये बात, वो भी लाइक गेट इनटू दिस प्रोग्रामिंग स्टफ एंड लाइक एक इंटरनल कॉम्पिटिशन टाइप से बन जाएगा कि लाइक कौन कितना मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है। तो Yeah. हैकरिंग से इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फॉर बिगिनर्स डिफिकल्टी लेवल इज good for them. They can learn a lot of stuff. Okay. Once you get to a point where you think like I am confident enough to do more complicated stuff, you can jump into coding contest. ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जैसे कि हाँ. कोडशेफ है, कोडफोर्सेस है, लीड कोड है. There you can like test yourself, among different people. There you can participate in contest and you can also practice questions over there as well. क्योंकि वहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी हैकरिंग से ज्यादा है. वहाँ पे आपको क्या है कि मतलब कि जो सीखने का जो क्या कहते हैं ग्रोथ का जो है ना वो लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो आप धीरे धीरे ऐसे लाइक प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे एंड आपको हमेशा ना वो रहेगा, वो जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है ना कि यस कि मुझे कोई कोई से कुछ पूछ दिया ना कि मैं इसको आंसर कर सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आ जाता है जब भी आपको होता है कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। Yeah, like और फिर process मैं को test करते जाना है. Because people give up बहुत जल्दी. Even I used to do that. हाँ, ये एक और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यूजुअली मैं इस चीज को एक प्रिंसिपल है मेरा जो मैं फॉलो करता हूँ कि इट इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट इज अबाउट कंसिस्टेंसी। आप Yeah. ऐसे कुछ लोग होते हैं कि लाइक आज कुछ ऐसे जोश हो गया, आज मैं एक दिन में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, फिर ऐसे चलता रहेगा, इट हैपेंस फॉर अ वीक, देन Yeah. ग्रेजुअली दैट मोटिवेशन कम्स डाउन, Yeah. यू लाइक स्टॉप द प्रोग्रामिंग पार्ट। सो आई वुड से इवन इफ यू आर डूइंग 2 क्वेश्चंस और इवन 1 क्वेश्चन, यू शुड डू इट एवरी डे। आप किसी भी डे को जीरो होने मत दीजिए, एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ कीजिए कि वो कंसिस्टेंसी आप में हमेशा रहे। और Okay. एक बेटर पॉइंट है कि आप अगर एक किसी पार्टनर को ढूंढते हो जिनके साथ आप हमेशा आप ऐसे इंटरेक्ट करके बात करते हो कि उनके साथ आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, सो यू गाइस कैन लाइक यू बोथ कैन मींस मोटिवेट योरसेल्व्स कि लाइक देखो मैंने आज ये क्वेश्चन किया, यू कैन आल्सो ट्राई दैट वन। फिर वो Pair आपको ऐसे programming जिसे या पेयर बोलते हैं. प्रोग्रामिंग, या दैट इज वेरी वेरी की पॉइंट। सो Yes. लाइक दोनों में से मोटिवेशन रहेगा, वैसे मतलब कि मिलके प्रोग्रामिंग करेंगे और ऐसे उनको पता नहीं चलेगा बट वो खुद को बहुत डेवलप करके आगे ले चुके हों। Hmm. तो True. ये बात वो तो अपना एकदम से लाइक like result expect नहीं कर सकते, but you'll realize कि हाँ confidence build up हो गया है. learning is a very slow process, but it is very important, right? Learning. Okay. फिर Rudra Sahu is saying, are you happy with your current company or want to switch? Well, I think it's too early to ask this kind of question. फिलहाल आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कंपनी। Autodesk पे आना भी एक ड्रीम ही है। So I'm very honored to be here and working with them, and I'm hoping to uh, get a like like continue here as well. Okay. And yeah, hacker rank, lead code hacker. Yep. I'm not sure like if we have any more questions, but yeah, let's continue with this. So yeah, like kuch advice, especially for our juniors, any tips? Jo bhi, they like a lot of students are going to get into. Abhi companies aa rahi hongi. May it's gonna start, especially our next batch. So, any tips for them? Any extra thing? Any resource that you would like to share? Like kuch bhi. अच्छा, तो the basic stuff would be like when you're applying to a company, you obviously have to go through their job description, right? So Yeah, really. it's a very important thing. So whichever tech stack they're working on or whichever role they are providing you to, you should have your resume tailored complete to it. वो जो टेक स्टैक या जो लैंग्वेजेस पूछ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अपने रिज्यूम को बिल्ड कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप टेलर कीजिए, जिससे कि इंटरव्यू को ऐसे लगे कि हाँ आप एक परफेक्ट फिट हो ये मतलब इस रोल के लिए। देन कमिंग टू लाइक आप प्रिपेयर कैसे क्या करेंगे। सो एज आई मेंशन लाइक ऑनलाइन बहुत फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब ऐसा कुछ है ही नहीं अभी कि लाइक देयर इज नथिंग ब्लॉकिंग यू टू लर्न।
अभी Yeah. जैसे कि चैट जीपीटी अवेलेबल हो चुका है, सो यू कैन आस्क हिम एनीथिंग एंड लाइक इट इज प्रोवाइडिंग यू द सॉल्यूशन वेरी इजीली, सो यू कैन आस्क एनी डाउट ऑन इट. तो आई वुड से कि ब्रॉडन योर डोमेन. आप ऐसे फ्लेक्सिबल रहिए, नए नए टेक स्टैक सीखिए, और ऐसे Yeah. कि मतलब कि कीप कोडिंग, मींस ऑलवेज ट्राई टू पार्टिसिपेट इन कॉन्टेस्ट, एंड यू कैन ऑलवेज लाइक चेक योरसेल्फ, लाइक आप किस पोजीशन में हैं अभी, आपके पास मतलब लर्निंग के लिए ग्रोथ है कि नहीं. So, and you can, and for communication, you can always reach out to people through LinkedIn. आप Yeah. एलुमनी के साथ रीच आउट कीजिए, उनके साथ बात कीजिए कि कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है, ताकि आप इंटरव्यू के टाइम में लाइक आपको पहले से पता हो कि ये कंपनी किस काम पे काम करती है, उनका वर्क कल्चर क्या है, वहाँ पे एम्प्लॉइज कैसे बिहेव करते हैं, कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है. यू नीड टू लाइक नो बिफोर हैंड व्हेन यू आर अप्लाइंग टू कंपनी और द इंटरव्यूज. इससे लाइक उन्हें भी ऐसे लगता है कि हाँ, कि ये स्टूडेंट इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, then it gets a good impression also on them. So these are like basic stuff. And any soft skill point of view, just a communication, people know the answer but they are not able to say it. Okay, for that I would like suggest you to practice talking in front of a mirror. आप खुद को रिकॉर्ड कीजिए, आप अपने वॉइस को सुनिए, आप कैसे बोलते हैं वो आपको लाइक खुद जानना चाहिए, क्योंकि ऐसे even for me when I'm speaking I don't know how I'm sounding or anything. So अगर आपको उस पे डाउट है, यू कैन रिकॉर्ड योरसेल्फ, आप अपने वीडियोस को बार बार देखिए, आप वर्कआउट कीजिए कि ये क्या मैं इस चीज को इम्प्रूव कर सकता था, अगर कर सकता था तो कैसे करूँ. यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू जो अगर आपके कोई पहचान में एचआर है, आप उनसे ऐसे फीडबैक भी ले सकते हैं कि मैं किस पॉइंट पे लाइक थोड़ा सा डाउन हूँ एंड व्हाट शुड आई इम्प्रूव ऑन. दे विल ऑब्वियसली गिव यू फीडबैक एंड यू कैन ऑब्वियसली वर्क ऑन दैट. You can say also कि there are some I've never taken any course on soft skill, but I think online is available भी रहते हैं, जिससे आप you can improve on that. And जैसे अगर resume में like you have to mention your years, right? तो किसी का gap year हो तो will that make any difference for the students? Okay, this is a tricky question. Okay, I'll tell my point of view. I don't know like if this is correct or not. So you should mention in a resume like what your key points are, what your strengths are, what your आप आपका जो पोटेंशियल है वो अपने रिज्यूमे में दिखाना चाहते हैं. तो एक एजुकेशन गैप आई थिंक ऐसा कुछ है जो थोड़ा सा नेगेटिव फील्ड में जाता है. सो आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसे एजुकेशन गैप को मेंशन ना कीजिए रिज्यूमे में. Really? I think you should not mention because I did mention my gap, Yeah, like okay, I took a drop. So I mentioned about my gap here. And he okay. asked me, the interviewer. ऐसा होता है क्योंकि आप Yeah, मेंशन like नहीं it's करेंगे. how you handle it, I guess. How you handle to Hmm. explain it. I had to explain it later. Okay, usually even education gap अगर मेंशन करते भी नहीं, of course the HR will get that. वो ऐसा आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका जो इस टाइप पे गैप था तो क्यों था. यू नीड टू प्रोवाइड अ जेन्युइन रीजन, क्योंकि आप ऐसे ही गैप नहीं लेंगे, आप कुछ सोचे होंगे कि आप मुझे इस गैप में करना क्या है. सो इफ यू हाँ. प्रोवाइड अ प्रॉपर रीजन कि हाँ मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा था, सो आई टुक अ गैप फॉर इट, देन वहां पे क्या होता है कि आप जरूर कुछ मिस्टेक्स पे आए होंगे. वहां पे मेन पॉइंट ऐसा रहता है कि आप उस मिस्टेक से क्या सीखे, आप कैसे कोप अप किए, और वो नेक्स्ट टाइम मिस्टेक ना हो. आप उससे कितना मतलब कि सीख के आए हो, कि मतलब मैं कितना खुद को अपस्किल करके डेवलप करके आया हूँ, वो चीज आपको मतलब कि दिखाना पड़ेगा इंटरव्यू को, कि ताकि आप जो गैप लिया है ना आपने अच्छे से यूटिलाइज किया है. ऐसे बोलने से लाइक वो जो नेगेटिव है उनको लगेगा कि हाँ भले इसने गैप लिया है बट ही प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड इट एंड अपस्किल्ड हिमसेल्फ. Okay. And one more important point, like resume में लोग बहुत fake लिखते हैं कभी कभार. Okay. Like Okay, I get this. So any point that you mentioned fake. नो was दिस ये मैं इस चीज के एकदम खिलाफ हूँ. आप कभी भी जो आपको आता है प्लीज वही मेंशन कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे फेक चीज लिखेंगे द इंटरव्यू विल ऑलवेज गेट इट, क्योंकि वो आपके रिज्यूमे को एकदम पता है ऐसे स्कैन कर देते हैं आपने क्या Scan क्या लिखा करते है. हैं, right? वही वो कुछ भी ऐसी चीज पकड़ेंगे, पूछ लेंगे, आप उस पर कुछ नहीं बता पा रहे हैं तो उनको लगेगा कि मे बी इट्स फेक. तो Yeah. ऐसे ही कुछ लाइक यू शुड नॉट गो टू दैट थिंग. आपको जो आता है वही लिखिए, अगर आपको नहीं आता है बिल्कुल मेंशन मत कीजिए. इंस्टेड लर्न दैट थिंग
एंड इफ यू थिंक अगर अभी के मार्केट में अगर उस टूल का इम्पोर्टेंस बढ़ने वाला है, आप उसको पहले सीखिए फिर मेंशन कीजिए रिज्यूमे। ऐसे झूठ नहीं बोलना है। मेरे इट्स को गलत। ChatGPT आता है, I'll mention that in my resume. Okay. Rudra Sawa is saying, I want to join Autodesk. How's the work culture there and what they expect us to know? ओके, वर्क कल्चर के बारे में अगर आए तो मैं जब पहली बार आया, I didn't know anything about corporate life. ठीक है? So when I started, speaking to my team or any other employee, the way they talk, it is so polite, ना? It feels as if even if they will scold you, it will feel like a compliment. इतना अच्छे से बात करते हैं यहाँ पे लोग। So ऐसे एक अलग वाली फील नहीं आती है यहाँ पे। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, you belong here. तो वर्क Okay. कल्चर का तो ऐसे हो गया। एंड if you want to join over here, so Autodesk is currently actively hiring for interns all around the Okay. globe. So you can check out their career page and also their LinkedIn pages if you want to apply, and hope so it goes well for you. Well, I guess any more questions? I don't think और कुछ है, but yeah, like काफी knowledgeable रहा and we have covered a lot of points. So Amrit, like, thank you so much, for joining and making this live. Thank you for inviting me. Glad Had to join. some technical issues in the beginning, but well, Yeah, all I'm glad to join. that an email or something. I don't know. Yeah. It was also nice connecting with you after so long. Yeah, like thank you so much, for last moment पे ही मैंने ये live रखा. Yeah, no issues. So thank you so much for joining me. And Rudra is asking, do they have good work-life balance? Yeah, as I mentioned, there is no timing over here, right? यूजुअली क्या होता है कि कुछ कंपनीज में ऐसे फिक्स टाइम रहता है कि आपको 9 बजे आना है, 6 बजे जाना है। यहाँ पे like वैसा कल्चर नहीं है। आप अगर यहाँ पे एक ऐसा ट्रस्ट है कि एक एम्प्लॉय आएगा तो टाइम पे आएगा, टाइम पे जाएगा। वो एक ट्रस्ट यहाँ पे मेंटेन हो गया इस कंपनी में। Okay. तो आपको अंदर से ही वो क्या कहते हैं, वो मतलब कि उत्सुकता आएगी कि आप ऑफिस जाएं टाइम पे, ऐसे लौटिए। फिर यहाँ पे लाइक फैसिलिटीज बहुत अवेलेबल है। देयर इज फूड, देयर इज गेम जोन। यहाँ पे आप मतलब कि बहुत लाइक you will love this place, and you won't feel any pressure over here. But so you are in Bangalore right now, yeah, right? I'm in Bangalore currently. And if you do your work on time, so the team will appreciate you, and you will love this place, and there is what can I say, there is no bad thing about here. Obviously. Yeah. Okay, so like really it was great session, and all the best for your internship. Thank you. And yeah, I guess this is it. I'll stop my stream. Thank you so much guys for joining. Bye.